आज हम इस व्लॉग में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं और उम्मीद है कि जो एक्सपीरियंस जानते हैं कि एकोमोडेशन लेना कितना आसान है, मुश्किल है, क्या है, तो डिटेल से इस पे बात करते हैं। लास्ट क्यू लाइक व्हाट आर द फैक्टर पीपल शुड कंसीडर व्हेन दे आर लुकिंग फॉर एकोमोडेशन हियर इन। मैं आपसे पूछूं डॉक्टर कि यहाँ पे जो नॉर्मल अगर एवरेज कॉस्ट की मैं बात करूँ, एवरेज कॉस्ट की बात करूँ, With my experience, I believe it will be easier to get an apartment when you have a price. ये नहीं है कि वो आपसे कोई फ्रॉड करें या आप उनके साथ कोई फ्रॉड करें, हर चीज़ जैसे है वैसे। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे साथ दो दोस्त बैठे हैं। तो आज हम इस व्लॉग में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं और उम्मीद है कि जो व्यूवर हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल साबित होगी। और हम बेसिकली आज बात करेंगे एकोमोडेशन के हवाले से कि आप पोलैंड में गदांस में किस तरह एकोमोडेशन ले सकते हैं। और ये व्लॉग इंग्लिश और उर्दू दोनों में होने जा रहा है, और ताकि जो कि फॉरनर हैं जो कि इंग्लिश को समझते हैं उनको भी इंफॉर्मेशन मिले, और ऑब्वियसली जो पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश से भी है, उनको भी समझ आ जाए। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ साकिब भाई, आप अपना तारुफ करा दें यूट्यूब फैमिली के साथ, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। हेलो, मैं मोहम्मद साकिब और पीएचडी कर रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी में। और मैं और काशिफ भाई हम लोग एक ही बैच में इधर इनरोल हुए थे और ये वीलॉग वगैरह बनाते रहते हैं। और आप ज़रूर देखें इस वीलॉग को मुकम्मल, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो शायद पहले आपको पता ना हो। और काशिफ भाई के मज़ीद वीलॉग भी, अगर आपने गदांस या पोलैंड के बारे में कोई इन्फॉर्मेटिव वीलॉग्स देखने हैं तो वो काशिफ भाई के वीलॉग ज़रूर देखें, क्योंकि ये आलमोस्ट गदांस के किसी और शहरों में भी घूमते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ के बारे में वीलॉग बनाते हैं। इवन कुछ वीलॉग्स में आपको मे भी किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री की भी इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो आप देखते रहिए इनके वीलॉग्स। जी जी गाइस, मैं नॉर्मली आपको पता है ट्रैवलिंग करता रहता हूँ, बाकी सिटीज़ वगैरह घूमता रहता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन यूज़फुल हो वो अपने व्यूवर के साथ मैं शेयर करूँ। तो थैंक यू साकिब भाई, आपने इंट्रोडक्शन कराया। नाउ आई विल कम टूवर्ड माय फ्रेंड, ही विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, देन वी विल टॉक अबाउट द एकोमोडेशन। Hi everyone, my name is Hamid Majid and I'm from Nigeria. I'm studying PhD in Information Telecommunication in Gdansk University of Technology, and I'm specifically studying on software engineering processes optimization. Thank you. I'm so happy to be here and to discuss this issue with you. के लिए जिस तरह मैंने कहा कि हम आज बात करेंगे एकोमोडेशन के हवाले से। ये ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होता है कि वो पोलैंड में किस तरह एकोमोडेशन फाइंड करे, और उसमें पूरी डिटेल से बात करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा। एकोमोडेशन इन्होंने बाहर लिए हैं, तो इनके साथ फैमिली भी यहाँ पे हैं, और इनसे पूछते हैं, इनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि एकोमोडेशन लेना कितना आसान है, मुश्किल है, क्या है, तो डिटेल से इस पर बात करते हैं। तो साकिब भाई, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि एकोमोडेशन यहाँ पे गदांस में आपने कैसा पाया, मुश्किल है फाइंड करना, आसान है, या कैसा है, आपका एक्सपीरियंस क्या है इस हवाले से? वेल, इट डिपेंड्स अपॉन दैट यू आर स्टूडेंट और वर्किंग हेयर और यू आर कमिंग ऑन विजिट। तो उस पर डिपेंड करता है कि अगर तो आप विज़िट पे आ रहे हैं फिर तो आपको इतना मसला नहीं होता, आप एयरबीएनबी या होटल वगैरह में बुकिंग कर लेते हैं। और अगर आप स्टूडेंट आ रहे हैं फिर भी आपको इतना इशू नहीं होता, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ यहाँ, इवन गदांस यूनिवर्सिटी एटलीस्ट पॉलीटेक्निका गदांस जो है अपने स्टूडेंट्स को स्टूडेंट डॉर्मेट्री फराहम करती है मार्केट से बहुत ही चीप रेट्स पे। और इवन यूनिवर्सिटी ऑफ गदांस में है, तो अगर आप तो स्टूडेंट है तो मोस्टली आपका जो इशू है वो यूनिवर्सिटी डॉम के साथ ही रिजॉल्व। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहा हूँ यहाँ पे, अगर आप गदांस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं यहाँ पे, तो आपको, अगर आप मैरिड हैं, आपके साथ सिर्फ वाइफ है, तो गदांस यूनिवर्सिटी आपको डॉर्मेट्री देती है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो फिर आपको बाहर बाहर अपार्टमेंट बुक करना या लेना पड़ेगा। तो नाउ आई विल कम टूवर्ड हमीद मुजीद। I'll ask you like what are the factor people should consider when they are looking for accommodation here in Gdansk? All right, it is not far-fetched. As a foreigner here, maybe it might be a bit difficult to understand the terrain and how to spot a good place to get an apartment.
But most importantly, anytime we are looking for an apartment as a student, you can only speak as a student, so we need to focus in an area where you can easily commute to the university environment. So you need to check the buses, check the tram station. So if the close by tram station and bus stop, so if you can easily get to the university, that it's more better to catch up with your classes and the rest. Then another thing again is, as a student, you need to get some store, do your groceries, so you have to look for an apartment in which is very close, not too far away from malls and shops, where you can get do your grocery and get some of your things that you will need it. So apart from that, we also look at some other important monumental areas, yeah. and park, beach and the rest, just to enjoy life, not study all the time. So True, true. these three factors are very key when True. choosing an apartment, when looking for an area to get an apartment. Yeah. और True, इसमें true. क्या चलें स्टूडेंट के हवाले से, अगर आप वर्क पे आ रहे हैं या इवन एज अ स्टूडेंट आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ मूव करना चाहते हैं, तो उस सूरत में जब अगर आपको बाहर ढूंढना है अपार्टमेंट, तो ये थोड़ा सा आपके लिए टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, क्योंकि यूक्रेनियन वार के बाद यहाँ थोड़ा सा मुश्किल भी हो गया है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हो गया है बाहर अकोमोडेशन लेना भी और फाइंड आउट भी करना। जहाँ तक ढूंढने की बात है तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। एक तो इवन आप सिंपल गूगल पे भी अगर आप टाइप करेंगे तो आपके पास बहुत सारी अगर मैं आपसे वेबसाइट आ पूछूं जाएंगी। डॉक्टर कि यहाँ पे जो नॉर्मल, अगर एवरेज कॉस्ट की मैं बात करूँ, एवरेज कॉस्ट की बात करें, वार से पहले क्या थी, अभी क्या चल रही रेट एकोमोडेशन की नॉर्मल? वार से पहले तो आपको जो है ना 2 बंदों के लिए फ्लैट 1800 से 2500 में भी मिल जाता था, इंक्लूडिंग बिल्स और इलेक्ट्रिसिटी और, लेकिन अब आपको 2500 से 3500 के दरमियान ही मिलना है। 2500 में भी बहुत मुश्किल है, 2700 2800, वो भी एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स वगैरह। सो मैं नॉर्मली आप जहन में रखें कि 3000 से 3500 तक एवरेज कॉस्ट है अब, वो भी मोस्टली फ्लैट जो 2 बंदों के लिए। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा मज़ीद वर्कआउट करना पड़ेगा, मज़ीद ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जो नॉर्मल फ्लैट्स होते हैं मोस्टली वो कहते हैं जी कि किड्स के साथ, तो वो फिर वो कहते हैं जी कि आप बड़े अपार्टमेंट में जाएं, या फिर इट डिपेंड्स करता है कि आप अगर, क्योंकि नॉर्मली जो फ्लैट होते हैं वो एक बेडरूम होता है और किचन और छोटा सा टीवी लाउंज होता है। तो अगर तो आप इसमें बच्चों के साथ मैनेज कर सकते हैं तो फिर आप वो ले लें। अदरवाइज़ आपको, अगर आप बड़े फ्लैट में जाएंगे फॉर एग्जांपल 2 बेडरूम के साथ, तो वो कॉस्ट फिर ज़ाहिर बात है 4500 4500 तक भी जा सकती है। हाँ गाइस, डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छी बात की इस हवाले से कि नॉर्मली जो कॉस्ट आपको सिर्फ अगर आप हस्बैंड और वाइफ है तो आपको 3000 से लेके 3500 तक मिल सकता है अपार्टमेंट फ्लैट। अगर आपके साथ बच्चे तो महंगा भी मिल सकता है। और रिसेंटली माय फ्रेंड हमीद मुजीद गॉट अपार्टमेंट हेयर इन गदांस। लेट मी आस्क हिम लाइक व्हाट वाज द कॉस्ट एंड व्हाट ही फील अबाउट दैट अपार्टमेंट। Thank you so much. Getting an apartment in Gdansk, I will tell you, it is not that easy if you have family. If you have family, it is not that easy. Yeah, exactly. Like for me, I'm talking from my experience. I have 2 kids with my wife, that is we are 4. So it is very hard to get an apartment of 2 rooms. I mean living room and 1 bedroom that will take you, because majority of the landlords are not, maybe by rule, I don't know, they are not agreeing to accommodating 4 people in 2 bedroom, in 2 room apartment. So I had to settle in for 3 room apartment with 2 bedrooms, and it was very hard, but alhamdulillah, we're able to get What is the cost like? The cost is, the total cost I'm going to be paying is like 3,600 per month. 3,600 per month. Which yeah. I even got at a very, very cheap rate according to my survey around. So, but
normally, as with that kind of house, you have to book up to 4,000. It's also depend on the place you The book. Here location, is the close book. to the university. Exactly. But University, if you city center, yeah, city center. and near the grocery stores, Exactly. etc. So those things, it all. this make the apartment more costlier than Yeah. the one that are far But if away you from the apartment. go far away from the city, Yes, Yes. you or get city you center, get you maybe get you will get a 2,500. cheap apartment, but it Exactly. would be hard for you to come to the university all the time. Yes. Each day it's hard for you. Yeah. साकिब, मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे जो गदांस में लोकेशन के हवाले से आप क्या समझते हैं, कौन सी लोकेशन अच्छी है? यहाँ पे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हैं, और कौन सा आप कहते हैं कि बेस्ट सूटेबल है लोकेशन गदांस में? अच्छा, इसमें अमूमन अगर तो आप जॉब कर रहे हैं सिटी में, तो फिर तो आपका वजश जो है जहाँ पे आपका ट्रेन स्टेशन भी है, फिर उसके बाद गोवनी है जो मेन जहाँ पे ट्रेन स्टेशन है, वहाँ ओल्ड टाउन भी है। दूसरा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, बजनो है, वो बीच के करीब है। तो तीनों एरियाज़, इसके अलावा भी एक दो डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन ये तीनों एरियाज़ ऐसे हैं कि ये सिटी सेंटर से रीचेबल हैं। अगर आप यहाँ इन एरियाज़ में रह रहे हैं तो मीन कि आप अगर ट्राम पे भी ट्रैवल करते हैं तो 15 से 20 मिनट में आप मिनिमम यूनिवर्सिटी में भी पहुँच सकते हैं, या जो यहाँ पे शॉपिंग मॉल है या कुछ तरह, वहाँ पे भी आप यानी कि 15 से 20 से 30 मिनट के सफ़र में आप यानी कि सिटी में ट्रैवल कर सकते हैं अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट्स में रह इसके रहे हैं। हवाले से मैं गाइस साकिब भाई से पूछना चाहता हूँ कि ये जो डिस्ट्रिक्ट आपने बताया ये कितने सिक्योर हैं, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट आप समझते हैं कि सिक्योर नहीं फॉरनर के लिए? लेट्स सपोज अगर कोई फॉरनर यहाँ पे आए, तो अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो बता दें इस हवाले से। ऑलमोस्ट ये तो जो सिटी और इसके अराउंड का एरिया है ये तो सिक्योर ही है, क्योंकि एक बात है कि गदांस जो है मोस्टली क्योंकि ये टूरिस्ट सिटी है, तो इस हवाले से भी सेफ़ है, यानी कि इतना कोई किसी चीज़ का मसला नहीं है। और होता भी जैसे बजनो भी है, वो भी टूरिस्ट पॉइंट है, सारा बीच है वहाँ पे। इसी तरह गोवनी है, वहाँ ओल्ड टाउन है, वहाँ भी इस तरह का कोई इशू नहीं है। इसी तरह वयश है, वहाँ पे भी वो सेंटर ही है। तो इसके अलावा उधर आगे पीछे भी हैं, लेकिन मीन पीसफुल है, इतना कोई जो है ना वो डरने वाली बात नहीं है। बस ये हो सकता है कि अगर आप फार फ्लंग हैं तो ट्रैफिक का हो सकता है इशू, या फिर आपको ग्रोसरी स्टोर का इशू हो सकता है। और फिर ये भी होती है कि अगर वहाँ पे कम्युनिटी है तो समटाइम ये भी होती है कि उस कम्युनिटी में कोई भी फॉरेनर नहीं रह रहा होता। तो अगर आप उधर रहते हैं तो समटाइम ये होता है कि वो भी थोड़ा सा ऑड फील करते हैं कि फॉरेनर है कोई। तो अदरवाइज़ कोई इतना मसला नहीं है, पीसफुल ही है। Mujid, I will ask your opinion about does anybody recommend you a place about peaceful or secure for a foreigner, because you are a foreigner here? Anybody recommends specific location or city or district in Gdansk? Yes, I would say, in my opinion, I think Gdansk is a very peaceful town, city, and environment. The people are welcoming, there's no problem. But the only issue is, as a foreigner, when you live in a place where there are no foreigners, so it might be a bit hard for you to connect to people. Yes. So our advice as a foreigner, you stay around school environment where you can actually see other foreigners living as a neighbor. So like that, it will be easy for you to connect, share. So other than when you live far, let's say for example, somebody live in the old town. Old town is a bit far away from here. So you might likely have every of your neighbor to be Polish people. So it might be a bit difficult because of the different languages, different culture. Exactly. But when You see, want to be when you see in foreigner, the in the foreign environment, exactly. So when you are close to a university, so you get more foreign people. So it's like an international environment. So it's easy, like living nearby a university, it's easy to find people Exactly. who can speak English. Exactly. This is also one of Exactly. the That important one of points. the important points. Yeah. So because somebody actually recommended from one of my senior colleague here recommended that I stay somewhere close to university so that I can live with people who will speak English. So which is very key. Nice. Very Nice. key. It's to it. interesting. Yes. या थैंक यू। आकिब, आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं कि ये यहाँ पे जो आपने अकोमोडेशन फाइंड किए, इसके हवाले से अगर वेबसाइट हो और अगर आपको मालूम हो तो आप बता सकते हैं जर्नली? नॉर्मली आप OLX पे भी इवन जाके कर सकते हैं सर्च, और इवन आप जब आप इधर गदांस में हैं तो आप गूगल पे भी सिंपल क्यूरी लिख सकते हैं कि अकोमोडेशन इन गदांस, तो वो भी आपको वेबसाइट बता देगा। और कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स भी हैं जो पोलिश वेबसाइट्स हैं, लेकिन आप जब गूगल क्रोम पे करते हैं तो वो ट्रांसलेट कर देते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। उन वेबसाइट्स में कुछ हम डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देंगे। इनमें जैसे
एक है ओग्लोशिनिया, और चूँकि पोलिश प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, तो अगर कोई होता है तो इस वजह से हम इसको डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे ताकि आपके लिए उसको एक्सेस करना आप इजीली आसानी हो। विजिट कर सकेंगे। यस, इसके अलावा ऑटोडॉम एंड OLX ये मेन है। अदरवाइज़ आप जब गूगल सर्च में भी क्यूरी लिखेंगे तो हो सकता है वो मज़ीद कोई आपको रियल एस्टेट्स की वेबसाइट्स बता दें। Exactly. Hamid Mujid, the Saqib mentioned some website. Would you share your experience about those websites? What kind of accommodation people can find on those websites? Thank you. I would say there are two ways to it. Actually, the best thing is to start from the public. Actually, when I was trying on my own, when I was checking on my own, I tried all the public rental services online. There are so many of them, like Autodom, like Rent a Dom. There are so many of them around. So I think we are going to this is going to share it on your screen so that you can see all those links that you can see publicly. But with my experience, I believe it will be easier to get an apartment when you have a private agents. There are some private agents that manages apartments. So when you get their website, maybe they have only 5 or 6 houses available. So you are sure that you don't have to go through another link overlay, because the public they just gather offers around. Yes. Then they start taking you from one side to another side, another side before you get to where you are going. So in the end, a majority of them are even old offers. So sometimes you see 2021 offer. Mostly when you contact through those They said they have already- they also hesitate that okay, maybe that foreigner is coming or not, etc. Yes, But when exactly. you are when you will go through any private agent, then they will be sure that okay, exactly this- they are the one managing the apartment, so they can guarantee that available is not available. So that is how I got my own precisely. So I go to the private. And the one most important thing here, like everywhere in Europe, etc., even here in Gdansk, that if you are getting any apartment, there will be a proper legal agreement. Yes. And you have to read that agreement The rule properly. and regulation, yeah. Exactly. Rules, regulation, and how much deposit will you submit, and how will be deducted, how much it will be deducted if you leave the appointment early, etc. So you have to obey that agreement. So इसको आप लाजमी देख लें कि आप जो एग्रीमेंट कर रहे हैं उसके तमाम रूल्स को पढ़ लें कि एग्रीमेंट क्या है, उसमें क्या क्या है, क्योंकि एक तो लैंडलॉर्ड भी बाउंड होगा उस एग्रीमेंट के। अगर कुछ हैपन भी होता है तो आपको पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट में क्या था और आपके राइट्स क्या हैं और आपने उसको कैसे करना है। वो यहाँ एग्रीमेंट के ऐसा नहीं है कि आपने किसी से रब्ता किया और उसने कहा चलिए ठीक है मैं आपको दे दूँगा, नहीं, यहाँ प्रॉपर एग्रीमेंट होता है और आप लोगों को उस एग्रीमेंट को करना पड़ता है, ओबे करना पड़ता है उसको। एग्जैक्टली काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने दी डॉक्टर साहब, थैंक यू। आपने भी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी। हमीद मुजीद, यू आल्सो शेयर वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन। गाइस, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अपार्टमेंट हियर, जस्ट गो विद द private option. Some agent have like some homes, you can visit them and you can visit on time. एक आखिरी चीज़ कि जैसे हमने पहले भी मेंशन किया कि आपने ट्रैम स्टेशन या बस स्टेशन देखने हैं और ग्रोसरी स्टोर्स देखने हैं। तो जब आप अमूमन गूगल वगैरह पे सर्च करते हैं तो ग्रोसरी स्टोर्स, जहाँ पे 2 मेन ग्रोसरी स्टोर्स हैं जहाँ से आप ऑलमोस्ट हर चीज़ बाय कर सकते हैं। एक तो जो स्पेसिफिक की पोलैंड में है उसको बिदरोंका कहते हैं, और दूसरा जो होल यूरोप में भी है लीडल। तो ये मेनली 2 ग्रोसरी स्टोर्स हैं, और अगर आप खुद ऑनलाइन पे सर्च कर रहे हैं, लोकेशन से देख रहे हैं कि नियर बाय कोई ग्रोसरी स्टोर है या नहीं है, तो वो आपने इन 2 स्टोर्स को ध्यान में रखना है। ऑलमोस्ट आप बिदरुंका यहाँ पे एक कॉमन सुपर स्टोर यूज़ होता है, एक लोकल ब्रांड है पोलैंड का, तो आप इसको जहन में रख के अपार्टमेंट देख सकते हैं क्योंकि ज़्यादा चीज़ें आपको वो बिदरुंका से में मिलेगी ग्रोसरी की। तो वन इम्पॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट फ्रॉम यू एंड देन फ्रॉम हमीद मुजीद। साकिब, आप क्या कहेंगे कि अगर आप अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, जो प्राइस मेंशन होती है वेबसाइट पे उसको निगोशिएट कर सकते हैं या फिर वही प्राइस होती है? आपका एक्सपीरियंस क्या है इस हवाले से? बहुत कम निगोशिएट होता है, बहुत कम। मीन के सम टाइम वो कहते हैं कि अच्छा हम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बिल इंक्लूड कर दें, अदरवाइज जो उन्होंने मेंशन किया है मोस्ट ऑफ द टाइम वही वो होता है। ओके हमीद मुजीद, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस व्हेन यू आर फाइंडिंग अपार्टमेंट हियर? Do you think any negotiation on the price can be possible or it's fixed rate? I think everything here is actually backed by law and legal restrictions. So you just have to follow
there's no negotiation as far as I'm concerned. What you see is what you get, as it is. What you see on the advertisement is exactly what you get. The only thing that might change is the fee for the bill for the electricity and some other services you are running in the house. But what you see there is the same amount. जो आप ऐड देखेंगे ऑनलाइन, उन्होंने हर चीज़ मोस्टली उन्होंने हर चीज़ क्लियरली मेंशन की होती है कि रेंट इतना होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल हम पे करेंगे या आप पे करेंगे। इसके अलावा इवन जो उन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम पिक्चर्स भी लगाई होती हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई डैमेज है, तो वो भी उन्होंने मेंशन किया होता है। मीन के ये नहीं है कि वो आपसे कोई फ्रॉड करें या आप उनके साथ कोई फ्रॉड करें। हर चीज़ जैसे है वैसे होगी, और जो उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि आप जो उनके साथ लीगल एग्रीमेंट करेंगे उसकी बेस पे वो उसको। हाँ गाइस, यहाँ पे जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ पे हर चीज़ लीगल है और हर चीज़ फिक्स होती है, जो हर चीज़ मेंशन होती है। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, बाकी जो प्राइसेस है, सारी डिटेल मेंशन होती है। इसमें कोई सी आपको ये नहीं कह सकते कि कोई आपको धोखा दे सकता है। तो इससे वो बेफिक्र रहें इस हवाले से। तो थैंक यू साकिब भाई, आपने वक्त निकाला और मेरे यूट्यूब चैनल पे आए और इतनी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर की यूट्यूब के साथ, फैमिली के साथ। तो हमीद मुझे थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेकिंग योर टाइम आउट, आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो इंशाल्लाह गाइस, इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस तरह की वीडियो आती रहेगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हाँ गाइस, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है एकोमोडेशन के रिलेटेड, जो हमने मिस किया हो, जो हमने डिस्कस नहीं किया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे, और मैं कोशिश करूंगा और साकिब भाई भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जवाब दे सके। तो बस ये आज का व्लॉग था एकोमोडेशन के हवाले से। उम्मीद है ये जो इन्फॉर्मेशन हमने शेयर किया आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।